Now the second exercise talks about the parallelograms in your textbook for areas and parallelograms. ओके अब हम एरियाज और पैरेललोग्राम्स कैसे निकालते हैं, मतलब लाइक एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं. किसी भी शेप का जब पेरीमीटर मुझे निकालना होता है, जैसे कि ट्रायंगल है या फिर स्क्वायर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या रेक्टेंगल है, इनके साइड्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं. दिस इज़ 5, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 12, तो हम इसको ऐड कर लेंगे. 22 + 5 27 हो जाएगा इसका. और यहाँ पे क्या होता है, इनका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका भी साइड का एस होगा, इसको भी एस देंगे, इसको भी एस देंगे, इसको भी एस देंगे. तो इसको जब हम ऐड करते हैं एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो क्या हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, राइट. तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला डिफाइन किया गया है. अगर सपोज करो ये स्क्वायर है मेरे पास, ओके मेरे पास ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 हो जाएगा. या फिर 2 4 बार आ रहा है, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, 4 टाइम्स ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 8. तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला डिफाइन किया गया था 4s करके. रेक्टेंगल के लिए क्या है, LLBB. तो मैंने क्या बोला आपको, L और L को ऐड करो, B और B को ऐड करो, ठीक है. तो ये क्या हो जाता है, 2L + 2B हो जाता है, ये इजंट इट. 2L आ जाएगा, ये दो ऐड होके 2L हो जाएगा, ये दो ऐड होके 2B हो जाएगा. 2 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बाहर लेके 2 × L + B लिखेंगे. इस तरीके से फॉर्मूलाज डिफाइन किए गए थे. इस द सेम तरीके से एक पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर एंड एरिया डिफाइन किया गया है. नाउ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. उससे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल विच हैज़ बीन टिल्टेड. ओके सीधा रखा हुआ था रेक्टेंगल, उसको मैंने ऊपर से धक्का मारा तो ये वाला ऐसे चले गया, मैंने यहाँ से उसको धक्का मारा तो वो ऐसे चले गया. पहले रेक्टेंगल कैसा था होगा, ऐसा रहा होगा, है ना. पहले तो रेक्टेंगल ऐसा रहा होगा, बट क्योंकि मैंने इसकी साइड को धक्का मारा तो ये ऊपर का साइड उधर मूव हो गया. इसके अंदर क्या हो जाता है, ये साइड जो है वो इसके साथ पैरेलल हो रहेगी, और ये जो साइड है ये इसके साथ पैरेलल रहेगी. इनारा कल एग्ज़ाम है सुबह, ओके ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेंगे. दैट मीन्स पैरेललोग्राम कैसे बनता है, एक साइड ऐसी, एक साइड ऐसी, और एक साइड ऐसी, एक साइड ऐसी. देखो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं. सो इन लोगों को हम लोग कहेंगे दैट दीज आर पैरेलल साइड्स करके हम लोग बोलेंगे. अब मैंने क्या कहा, सम ऑफ ऑल साइड्स. इसके अंदर भी क्योंकि ये वाले सेम होता है, रेक्टेंगल से ही ये बनाया गया है, तो इसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ यहाँ पर भी होगी, इसकी जो ब्रेथ होगी वही लेंथ यहाँ पर भी होगी. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ 2 × द बेस. अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको बेस कह रहे हैं, इसको हम लोग बेस ले रहे हैं, और इसको हम लोग हाइट ले रहे हैं. बेस प्लस द हाइट करके हम लोग बोल रहे हैं, 2 × बेस प्लस द हाइट करके हम लोग बोल रहे हैं. और एरिया क्या हो जाएगा उसका, बेस इंटू हाइट. एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. उसी तरीके से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू द हाइट. अब यहाँ पे जब हाइट की बात हो रही है, इट इज़ नॉट द स्लांट हाइट वी आर कंसिडरिंग. जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके दोनों के बीच की हाइट की बात कर रहे हैं. ओके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लांट हाइट. हम लोग कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं. बेस ये वाला जो है ना, ये ऐसे जा रहा है, राइट. यहाँ से यहाँ जो होगा, या फिर अगर मुझे मेजर करना है तो मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ से भी 90 डिग्रीज मेजर कर सकती हूँ, या मैं उसको यहाँ पर भी मेजर कर सकती हूँ 90 डिग्रीज बना के. सो ये वाली जो हाइट है, इसकी हाइट की बात की जा रही है, नॉट द स्लांट हाइट. परपेंडिकुलर हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके परपेंडिकुलर हाइट की बात की जा रही है. अब आपको पता है व्हाट इज़ द एरिया फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, द परपेंडिकुलर हाइट, एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × बेस प्लस हाइट करके आ जाएगा आपको. ओके नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं. इट इज सेड दैट देयर इज अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को मैं 2 स्ट्रेट लाइन डाल के GM करके लिखती हूँ. पैरेललोग्राम के शेप में एक फील्ड है. नाउ द adjacent sides are 70 and 45. adjacent का मीनिंग क्या होता है, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, नेक्स्ट टू ईच अदर. तो एक पैरेललोग्राम में नेक्स्ट टू ईच अदर के साइड्स कौन से हो जाएंगे. ओके तो यहाँ पे अब हम लोग, ये बन गया पैरेललोग्राम हमारा ऐसे. अब पैरेललोग्राम में ये आ जाने के बाद ये जो साइड है, ये सपोज ये साइड को हम नेम देंगे ABCD.
अब आप देखो ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू है, ए बी एंड ए डी भी बाजू बाजू है, तो ये दो और ये दो एडजेसेंट साइड्स कहलाई जा सकती है। फिर ये और ये एडजेसेंट हो सकती है, ये और ये एडजेसेंट हो सकती है। सो इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स बन जाती हैं। अब वो कह रहा है देयर इज अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, एडजेसेंट साइड्स आर 70 एंड 45। तो मैं इसको लूँगी 70 और इसी के बाजू वाली या ये बाजू वाली कहीं की भी हो, विच इज़ 45 मीटर्स। अब कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹30 पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे 30 पर मीटर गिवन है, दैट मीन्स पेरीमीटर की बात की जा रही है। अगर ₹30 पर स्क्वायर मीटर होता तो यहाँ पे एरिया की बात होती थी, बट यहाँ पर तो एरिया की बात नहीं, पेरीमीटर की बात हो रही है। और फेंस हम कहाँ लगाते हैं? फेंस हम पेरीमीटर के अक्रॉस लगाते हैं, इज़न्ट इट? फेंस हम यहाँ पे लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं पेरीमीटर ही निकालूंगी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू बेस प्लस हाइट। बेस इज नथिंग बट दिस 70 प्लस 45 इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दैट इज गोइंग टू बी 5, 7 प्लस 4 इज 11 इंटू 2, तो यहाँ पर है, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 5s are 10, 2 1s are 2 3, 2 1s are 2, so 230 rupees, no, meters is the perimeter that I get. अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब मैं लिखूंगी हेडिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करके, यहाँ पे मैं हेडिंग लिखती हूँ, ओके। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग में क्या हो जाता है? 1 मीटर का कॉस्ट इज गिवन एज ₹30। वैसे ही ₹230 मीटर्स का 230 मीटर्स का कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 230 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है। सो इसका हो जाएगा 23 इंटू 3 कर लो आप, 23 इंटू 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, ये 2 zeros लगा दो, 6900 रुपीज़ इज द कॉस्ट, आपको पता चल जाएगा, ओके। Now going ahead with the second question, it says that the side of the parallelogram is, one of the sides of the parallelograms is 12 centimeters, is at a perpendicular distance. The side of a parallelogram 12 centimeters, एक साइड है parallelogram की which is of 12 centimeters करके बोल रहा है, ओके, ठीक है। It is at a perpendicular distance, perpendicular distance मतलब ऊपर तक, distance जो है इसका ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड जो है इसकी, उधर से इसका 15 सेंटीमीटर्स है करके बता रहा है मुझे, ओके। सो ये एक हो गया बेस विच इज़ ऑफ 12 सेंटीमीटर्स। इस बेस पे से दूसरी साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे है करके बता रहा है, ओके। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया। हमको तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू द परपेंडिकुलर हाइट। ये इसका सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो ये वाली हाइट हो गई। हम कभी भी ये हाइट नहीं ले रहे एरिया के लिए, याद रखना। पेरीमीटर में हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, बट एरिया के लिए हम ऐसी हाइट नहीं लेते, हमको ऐसी स्ट्रेट हाइट चाहिए, ऐसी टी या एल बनाने वाली हाइट चाहिए, ओके। सो द बेस इज 20 इंटू द हाइट इज दिस। सो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 15 30 हो जाएगा, फिर ये 0 लग के 30 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हो जाएगा इसका आंसर, ओके। Third example question says that the ratio of the base and height of a parallelogram is 3:2। जैसे मैंने रेशियो पढ़ा और बेस को मैं लिखने लगूंगी, बेस इज इक्वल टू 3x एंड द हाइट इज इक्वल टू 2x। उसके बाद में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। जैसे मैंने रेशियो सोचा, मेरे दिमाग में ये आ गया, ये 3x एंड 2x हो जाएगा करके, ओके। नेक्स्ट कहता है द एरिया इज 384 centimeter square, find its base and height। Okay, so the area is given to me already, but area का फॉर्मूला क्या है, area is equal to base into the perpendicular height, okay। but area के नीचे area given है मेरे पास, तो area के नीचे area लिखा जाएगा is equal to the base is given to me as 3x into 2x करके ये given है मेरे पास, okay। अब ये क्या हो जाएगा, 384 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ये 6x हो गया, 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसको 6 को नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। सो इट बिकम्स 384 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप बोले कि 6 नीचे क्यों गया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में थे, दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में चला गया,
ओके अब ये डिवीजन आ गया, अब इसको कट करने लगेंगे। तो पहले तो मैं 6 की टेबल से कट करने की कोशिश करूँगी। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अब क्या हुआ, 6 6 ज़ा 36 तो चला गया, बट यहाँ पे कितना था, 38 था। सो 38 में से 36 चला गया, तो बचा क्या, 2। वो 2 मैं यहाँ छोटू सा 4 के साथ लिख दूँगी। तो नाउ दिस नंबर इज़ नॉट गोइंग टू बी रेड एज 4 बट इट विल बी रेड एज 24। अब 6 के टेबल में 24 आता है, हाँ 6 4 ज़ा 24 आता है। सो मुझे पता चल गया 64 इज इक्वल, दिस इज 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 64 को लिख सकते हैं 8 टाइम्स 8, और एक्स स्क्वायर भी तो 8 टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स ही हुआ, तो इसका मतलब पता चल गया एक्स इज इक्वल टू 8 मुझे पता चल गया। नाउ एक्स जब 8 सेंटीमीटर्स मुझे आ चुका है, ओके मैं बेस निकालूंगी इससे। द बेस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ एक्स विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट इज 2x विच इज़ 2 into 8 which is equal to 16 centimeters is the height, is what I know. After the next thing we have is the rhombus. Now what is a rhombus? If you understand, try to understand what a rhombus is. It is like a parallelogram, but in this parallelogram it is like a parallelogram actually. This side is parallel to this side, and then this side is parallel to this one. Okay, it is like this is what I have here, and all sides are equal here. It is a parallelogram with all sides equal. So it is all sides equal means it becomes like a square for us in our head, isn't it? But it is a parallelogram. A parallelogram with the all sides equal is called as a rhombus. Okay, it is called as a rhombus is what we understand. Okay, so I've written rhombus में all sides are equal, सारे sides equal रहेंगे. It is like a square but it is like a parallelogram also. Okay, next आ जाता है स्क्वायर। कैसे होगा, ऐसे होगा। अब स्क्वायर को मैंने पूरा इधर से दबाकर ऐसे कर दिया, बहुत ज़्यादा दबाया उसको ताकि वो ऐसे जाके ऐसा हो जाएगा। सो इट बिकम्स अ रोम्बस। नाउ रोम्बस में द लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट। व्हाट इज हियर, द डायगनल्स का जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स हियर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अंडरस्टैंड? सो अभी आपको समझ आ गया कि क्या डिफरेंट है। साइड्स तो सारे सेम है, अगर साइड सेम है और डायगनल्स भी सेम हो जाएंगे तो इट वुड लुक लाइक अ स्क्वायर, इजंट इट? अगर इसका डायगनल्स भी सेम है, इसका ऑल साइड्स भी सेम है, तो इट वुड अपीयर टू बी लाइक अ स्क्वायर इटसेल्फ। बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड सेम होने के बाद इसके डायगनल्स भी सेम हो जाते हैं। तो रोम्बस में डिफरेंट क्या है, इसके डायगनल्स ही डिफरेंट है। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज देयर अबाउट द डायगनल्स इज व्हाट आई हैव हियर। ओके, नाउ आप रोम्बस को एरियाज कैलकुलेट करना है। नाउ हमने बोला कि इट इज़ लाइक अ स्क्वायर, रोम्बस इज़ लाइक अ स्क्वायर बोला, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज़ लाइक द स्क्वायर। बट मैंने बोला स्क्वायर में भी वो पैरेललोग्राम जैसा है, तो इट इज़ बेस इनटू हाइट भी हो सकता है इसका एरिया। इसका एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाई 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज। एंड व्हाट आर द 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज? द फर्स्ट कैन बी एस इंटू एस, मतलब ये साइड इंटू ये साइड कर लेंगे तो आ जाएगा मुझे। या फिर अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंसिडर कर रही हूँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था बेस इंटू हाइट, तो वही यहाँ पे बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। और एक फार्मूला ये है कि इफ़ इट इज इसके क्योंकि डायगनल्स अलग अलग होते हैं, सो द एरिया ऑफ द रोम्बस कैन ऑल्सो बी टेकन एज हाफ d1 into d2, whereas d1 is diagonal 1 and d2 is diagonal 2। इस तरीके से 1/2 into d1 into d2 करके भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज देयर। नाउ पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, क्योंकि इसके सारे साइड सेम होते हैं। जैसे कि अगर ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, इनको अगर मैं ऐड करती हूँ एस प्लस एस प्लस एस, सो इट बिकम्स 4s। तो सेम जैसे स्क्वायर का है उसी तरीके से इसका भी है। तो अब हम वापस से लिखेंगे एरिया को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ d1 d2। अगर मेरे पास डायगनल्स के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में, मैं देखूंगी कि अगर वो डायगनल्स का बोलता है तो मैं डायगनल्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अगर वो कहता है रोम्बस है विथ द सेम साइड्स करके कहता है और डायगनल्स का कुछ नहीं बोलता है, देन s इंटू एस भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर b इंटू h भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वुड बिकम द बेस एंड दिस वुड बिकम द हाइट। ओके,
ऐसे कर सकते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स करके हम लोग निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 4s विल बी द पेरीमीटर ऑफ इट। Okay, the fourth question, it says that the side of a rhombus has a length of 8 centimeters. Okay, there's a rhombus. Rhombus is a parallelogram with all sides equal. So the length is given to me as 8 centimeters. The distance from the opposite side is 10 centimeters. Okay, अब इसका distance from the opposite side, इसका distance is given as 10 centimeters. Find the areas what I'm supposed to do here. So in here what we are going to do is we have been given the base and the height, but this rhombus, if you see, it is a slightly different rhombus that I have. Okay, ये rhombus में the sides are not exactly same, isn't it? क्योंकि rhombus में हम कह रहे हैं कि sides are same. So क्योंकि ये rhombus is not like a rhombus but it is more like a parallelogram, हम area of rhombus लिखेंगे लिखते टाइम पे, but formula कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? base into height वाला। ये वाला हमारा बन जाएगा बेस और ये वाला हमारा बन जाएगा हाइट। सो 8 टाइम्स ऑफ 80, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, ये यूजुअली रोम्बस में सारे साइड सेम होते हैं, बट इस रोम्बस में सारे साइड्स सेम नहीं है, तो अभी तभी जाके हम इसे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। The next question that is given is the diagonals of the rhombus measure 16 and 30. ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पे एक रोम्बस है जिसके डायगनल्स आर मेजरिंग एज 16 एज द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज मेजरिंग एज 30। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी ये तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, राइट तो मेरे पास क्या है? जब डायगनल्स गिवन है तो मेरे पास तो सिर्फ एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2 करके, बट पेरीमीटर का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? और पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, बोला सम ऑफ नहीं ऑल साइड्स। अब यहाँ पे साइड्स ये हो जाएंगी साइड्स, इजंट इट? दीज आर द साइड्स दैट हैव टू पे अटेंशन टू, बट यहाँ पे तो मेरे पास है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि ये क्या बना रहा है, ये जाकर क्या दिख रहा है आपको? ये एक मुझे दिखाई दे रहा है, नो वेट, मुझे ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट ये पूरा मुझे दिखाई दे रहा है लाइक अ ट्रायंगल, इजंट इट? ये पूरा नहीं, तब भी मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं ट्रायंगल भी लूँगी इसको तो मेरे पास ये और ये साइड नहीं आएगी, तो मैं एक एक वाला साइड ही लूँगी, सॉरी ओके मैं इसका वन साइड ही लूँगी, और ये साइड में मुझे ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल लग रहा है, इजंट इट? इट लुक्स लाइक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कंप्लीट हाइट 16 है, तो ऊपर वाले में 16 का हाफ हो जाएगा विच इज़ 8। ध्यान से सुनो, पूरा डायगोनल 16 है, मैं आधा डायगोनल ले रही हूँ तो ये 8 हो जाएगा। पूरा डायगोनल 30 है, मैं आधा डायगोनल ले रही हूँ तो ये 15 हो जाएगा। ये दो आ गए क्योंकि ये एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तब मैं इस साइड को हाइपोटेन्यूज के जैसे लूँगी, इसको मैं हाइपोटेन्यूज के जैसे लूँगी। और मेरे पास फॉर्मूला क्या है? ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटिंग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइट स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर हो जाता है। ओके तो अब हाइपोटेन्यूज को तो ऐसे ही रखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है मेरे पास? 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज 15। 8 स्क्वायर बिकम्स 64, 15 स्क्वायर बिकम्स प्लस 225 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 289 मेरे पास आ गया अभी। ओके अब मेरे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 289 आया। अब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज रूट ऑफ 289 विच इज़ इक्वल टू 17, इसका आंसर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज मतलब मुझे ये वाली साइड आ गई एज 17। अब पेरीमीटर क्या है? क्योंकि ये रोम्बस है, पेरीमीटर क्या बन जाएगा मेरा? पेरीमीटर इज़ नथिंग बट 4 × s, दैट इज़ 4 × 17 मेरे पास आ जाएगा। ओके इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7s are 28, 4 1s are 4, 5 6, so it is 68 centimeters will be it।
या फिर आप कर सकते हो 17 + 17 + 17 + 17, 7 4s are 28, 1 2 3 4 5 6, 68 will be the answer either ways आपके लिए. Okay, let's look at the figure over here. They are talking about the perimeters and areas of the composite figure. Now what do you understand by the term composite? Composite means that there are two shapes. It is composed of two or more shapes in it, or two or more figures are put together to form it. So if you look at it, you will see that this is a triangle. Also this is a parallelogram. So this is a composite figure. I will have a square attached to a triangle. So this is also a composite figure is what I see in here. Okay, now in the figure it says, in the figure ABCD is a parallelogram of adjacent side 30 centimeters and 25. Adjacent means this is 30 and the other is 25. Find the area of the shaded region. So what I am going to find is, I'll find the area of the parallelogram. Pehle sabka area we will find it out. From that I will remove the area of the triangle so that I get this area. Okay, so area of parallelogram, first what we are doing, parallelogram is equal to base into height I'm doing. So the base is this, that is 30, into the particular height is given as 24 centimeters. Okay, that turns out to be 3 4s are 12 and 3 2s are 6, 7 and 0, 720 square centimeters is what you get. Okay, then you have to subtract this area, right? Because the whole of parallelogram we found out. So area of triangle is what you're going to find here. So that becomes half base into height. Okay, so that is half in here. Base is given as 7 centimeters into 7 and the height is given as again 24. 2 1s are and 12s are. So that is 7 times of 12, that is equal to 84 is what I get in here, square centimeters again. So from the complete area, if I subtract this thing, so area of shaded region is equal to the parallelogram minus the triangle area. So that is 720 minus of 84 is what you get in here. So some people who cannot do it, I'm doing it in here for you. It becomes, I'll take 1, it becomes 10, 6, and this becomes a 6, it becomes an 11 here. 11 is 336, 636 would be the area. 636 square centimeters is the area of this particular part is what I learned from here. Moving ahead with the 7th question, it is given that ABCD is a rectangle. Okay, ABCD is a rectangle and find the area of ABECD. Okay, this part is a rectangle, then he's asking the area of the complete thing in here. So how am I going to find? So first I'll find this is one shape and this is the other shape that I have. So I'll find the area of the rectangle, then I will find the area of the triangle and I will add them together because it is a composite figure in here. Okay, so area of rectangle, area of ABCD is equal to length into breadth. Okay, so what is the length that I know? Length is 10 and the breadth is 7. So 10 times of 7, that is equal to 70 square centimeters is what I get. Then area of triangle I'm supposed to find. Area of triangle is equal to half base into height. And what will be the base? This will be the base. And if this is 7 centimeters, so also this will be 7 centimeters. This becomes the base. So it is half into 7. And the height is, this is the height of the triangle. अब क्या है, this part is already given to me as, if this is 10 centimeters, this is also 10 centimeters, then this remaining will be 15 is the total height. 15 में से 10 centimeters I'm subtracting, minus 10 centimeters, so this becomes 5 centimeters. So this height that I have here, this is going to be 5 centimeters. So that I'll write. So that becomes 35 upon 2, which is equal to, when I do 35 upon 2, it becomes, I'll divide it and do 35 in here. 12 ones are 2 ones are 2, 1 and 5, 7s are 14. Put a decimal, take a 0, then 5s are 10 it will become, isn't it? So it is 17.5 square centimeter you will get. The area of the shape is equal to area of shape or the shaded figure ABECD is equal to 70 plus 17.5, that is equal to 87.5 square
centimeters is what you will get. Moving ahead with the eighth question, which is given us, there is this ABCD is a rectangle, and in this they are asking us to find this particular shape. Now if you look at it, it's quite difficult to figure out कि इसका shape कैसे निकालेंगे, इसका area कैसे निकालेंगे. So if you look at the first one, it is a rectangle. So first we will find the rectangle. From that rectangle is the complete thing, you are going to subtract the area of this triangle, -1. This is also a triangle, -2, and this is also a triangle here, which is -3 is what I'm going to do in here. Okay, so first I will find the area of the rectangle. From this I'll subtract this rectangle, this triangle, this triangle, and this triangle. Then I will get this remaining part in here. So area of the rectangle is going to be what? Area is equal to length into breadth. What is the complete length that is given to me? Here they have given only 6 till here. I don't know how much it is, but on the other hand it is given as 10. Okay, the breadth is given as 10. What is the complete length then? It is 10 plus 8. Right, here also it is 10 plus 8, so it is 18. So 18 will come here, which is equal to 180 square centimeters is what I get. Then let's go with the area of the first one. Area of 1 is equal to, it is a triangle, so base is this and the height is this. It is half, base is 6 and the height is 10. So it is 2 ones are 3s are 3 tens are 30 square centimeters. Then area of 2 you're going to find. This is also a right triangle. Okay, so it is going to be half base into height, and the half is here. Base is going to be how much? This will be the base into 8 and into height. Height is 10 here. That goes 2 ones are 4s are, and which is 40 square centimeters as you get. Now look at this one here. You have to find the area of the third one. Area of the third is equal to half into base. Base is 10. Okay, into 10, and the height is how much? I don't know. The complete thing is 10. From that I am removing the 6. Then it will be left with 4. So into 4 I'm getting. Okay, so that is half. 2 ones are 5s are 5 4s are 20 square centimeter. Now what did we write? Rectangle -1 -2 -3. So the rectangle area is 180. So area of shaded region is equal to rectangle, which is 180 minus 30, this area minus this area minus this, minus 40 minus 20. So what will you do? 180 minus, add all of them. This becomes 20 plus 40, 60. 60 plus 30 is 90. So you will be equal, this remaining part will be equal to 90 square centimeters will be the area of this. Likewise, going ahead and finding the area of this particular shape. Again, the same thing is going to happen. Now this complete thing minus this triangle and minus this triangle. But is this a square or a rectangle? If you see, this is given to me as 20. This is given to me as 10 plus 10. That is also 20. So they both are same, means it is a square. So square area minus the first one and minus the second one. This is the second shape. I will get the area of this shape. Okay. So area of square is equal to 20 into 20. 2 2s are 4 and 00 square centimeters you will get. Then area of the first one is equal to, this is the first one, which is half. It is a triangle, no, base into height. So half, base is 10 and the height is 20, into 10 into 20. 2 ones are and 5s are. 5 2s are 10 and 0, 100 square centimeters. Then how about this area? We'll find the area of 2. It is half. Base is going to be how much? This will be the base. So the complete base is 20. If this is 20, this is also 20 because this is a square. So into 20 into height. Height is, this is completely 20. 10 is this much part. So this will also be 10. Isn't it? 10. 2 ones are, 2 tens are. So it becomes a 100 square centimeter. 10 into 10 is 100 square centimeter. So what did we write? Square
minus 1 minus 2. So square is 400, minus 1 area is 100 and the other area is 100. So it becomes 400 minus 200, which is equal to 200 square centimeters is what you get here. Okay, so this is the area of the shaded region. Shaded region area is equal to, this is what you get here. Understand? Okay, now the next question that we have here is that one side of the parallelogram is 1 meter 20 centimeters. Okay, there's a parallelogram. Let me just draw the parallelogram. And one side is 1 meter 20 centimeters. So 1 meter 20 centimeter is the side. So the distance from the opposite side is, from that means this distance from the opposite side is given as 80 centimeters. Okay, fine. Now you see this is in centimeters only and this is in meters and centimeters. तो इसको पूरे को completely centimeters में लेके जाएंगे. So we will write 1 meter is equal to 100 centimeter. ये हो गया 100 सेंटीमीटर में प्लस 20 सेंटीमीटर है. सो प्लस 20 सेंटीमीटर टोटल इज 120 सेंटीमीटर्स ये बन जाएगा. ओके, दोनों अब आपको सेंटीमीटर्स में आ गए. अब आप निकालोगे इसका एरिया, बिकॉज दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो द एरिया इज इक्वल टू base into height, the perpendicular height. Base is 120 centimeters into the height is 80 centimeters. Okay, so that goes as 96 स्क्वायर, सॉरी 96 नहीं आएगा, ये 8 12 96 हो जाएगा. फिर ये 0 00 स्क्वायर सेंटीमीटर्स वुड बी दी आंसर फॉर इट. ओके, तो आपने यहाँ पे ये सीखा है, इफ वन ऑफ द यूनिट इज इन मीटर्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स एंड ओनली देन you can multiply the same units. You cannot multiply different units. One is in meters, the other is in centimeters. You cannot. You have to either bring both of them to meters or both of them to centimeters. Going to the next question, it says that the difference of length between two adjacent sides of a parallelogram. Okay, ये parallelogram है. So parallelogram draw कर लेंगे हम लोग. Not always necessary the parallelogram is going to be like this. Some students के लिए parallelogram is going to be like this also. Okay, the difference between the length of the two adjacent sides means two adjacent sides, this side and maybe this side they are talking about. And when you're subtracting them, difference means what? Subtracting them. When you're subtracting them, you get it as 5 centimeters. Okay, so there is, iska value will take it as this, iska value we will take it as the dash. But when I'm subtracting both of them, I'm getting 5 centimeters. अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में. So what I will do is, इसके अंदर कुछ नहीं पता है. सो इन क्वेश्चंस एज सच विल टेक लेट द बेस बी x सेंटीमीटर्स. ओके, अब मेरे पास ये आ गया कि ये x सेंटीमीटर्स है. ठीक है, x हो गया, तो मैं यहाँ पे ये x लिख रही हूँ. अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमने ये देखा है ना. तो फाइंड दिस, व्हाट वी विल डू, 5 माइनस ऑफ x कर लेंगे हम लोग. जैसे कि ये हो गया 5 माइनस डैश इज इक्वल टू 4. 5 माइनस क्या, 5 माइनस 1 आ जाता है. कैसे आ रहा है, 5 माइनस 4 करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा. द सेम वे 5 माइनस x कर लेंगे तो मुझे ये वाला टर्म आ जाएगा. देन द हाइट इज इक्वल टू द हाइट, नो, द अदर साइड और adjacent side, you will say adjacent side will be 5 minus of x. Okay, it is going to be 5 minus of x we will get here. Okay, okay, और else इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, we can do it like this also. We can take it as, sorry my hair is fallen out. Now the second question says that the difference of length between two adjacent sides of a parallelogram. Now until now I was drawing the parallelogram this way, where I'm going to draw the parallelogram this way over here. Okay, it says that the difference between the two adjacent sides, so this is one of the side and this is one of the side, इन दोनों का difference, अगर मैं ये दो का डिफरेंस लूँ और ये दो का डिफरेंस लूँ, इट विल बी वन एंड द सेम. ओके, इस साइड का डिफरेंस एंड इस साइड का डिफरेंस इज 5. सो आई डोंट नो पहले तो ये साइड क्या है ना, तो मुझे ये साइड पता है. सो आई पुट 2 ब्लैंक्स फॉर दैट. ओके, 2 डैश या ब्लैंक्स डाल के छोड़ देंगे. और कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आंसर इज़ 5. सो व्हाट आई विल डू इज़, आई विल टेक द base or anything, any one side as x. So let's say let the base
let the base be x. Okay, that means this side is x. अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे, तो ये वाला साइड कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको इधर भेज दूंगी तो मुझे ये वाली साइड आ जाएगी, इजंट इट? अगर इस x को मैं इधर भेज देती हूँ तो ये 5 + x बन जाएगा, इजंट इट? तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? द हाइट, ओके, और द एडजेसेंट, हाइट बोलेंगे या फिर इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 5 + x हो जाएगा। वो ये इधर चले जाएगा तो ये इधर चले जाएगा तो 5 + x हो जाएगा। ओके, ये हो गया मेरे पास, ये दोनों साइड्स आ गई। अब वो कहता है इस 5, ये वाला स्टेटमेंट जो था उसका हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट कहता है द पेरीमीटर इज 58। ओके फाइन, सो आई विल राइट पेरीमीटर इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर्स। हम राइटिंग है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? अब मेरे पास ये वाली साइड क्या है? 5 + x है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये भी x हो जाएगी, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 5 + x हो जाएगी, बिकॉज ये रेक्टेंगल है टिल्टेड वाला, इजंट इट? सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो एक हो गया x, फिर ये आएगा 5 + x, फिर दूसरा वाला है x, फिर दूसरा वाला है 5 + x। 5 + x इज इक्वल टू 58। ओके, नाउ अब मैं इसको सॉल्व करने लगती हूँ। x, इसको ब्रैकेट्स खोल देंगे पहले। x + 5 + x + x + 5 + x इज इक्वल टू 58। ओके, कितने x हो गए? 1 2 3 4, 4x सारे ऐड करने के साइन के साथ है तो 4x हो गया, प्लस 5 + 5 बिकम्स 10 इज इक्वल टू 58। तो अब सिंप्लीफाई करने लगेंगे। x निकालना है मुझे, तो पहले मैं इसको इधर भेज दूंगी। सो इट गोज एज 4x इज इक्वल टू 58 - 10 विच इज़ इक्वल टू 48 आ गया मुझे। 4x इज इक्वल टू 48। इस 4 को नीचे लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिवीजन हो जाएगा। सो 48/4, 4 1 ज़ा एंड 4 1 ज़ा 2 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो मुझे क्या आ गया? x क्या लिया था हमने? बेस लिया था। सो द बेस इज इक्वल टू 12। ओके, और मैंने हाइट कितनी बोली थी? या फिर एडजेसेंट साइड कितना लिया था हमने? एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू हमने लिया था 5 + x। adjacent side is equal to 5 + x, which is nothing but 5 + 12, that becomes 17 centimeters are the units for both of them. Centimeters, and the base and the adjacent side are 17. Okay. The next question says that measure of one of the side of the parallelogram is 12 centimeters. Okay, there's a parallelogram again, and one of the sides is 12 centimeters. So let this be the side. Area is given as 204 centimeters square. Find the distance from the opposite side. That means this is the length that they are asking about, the height. Okay, so the given thing is area is given to me, which is 204, but I also know that area is equal to base times height. It is also given one of the side is 12 centimeters, which is the base we are taking in here. So substituting in here, the area value is given as 204. So under area, I'm writing 204, and the base is given as 12 centimeters, and the height is unknown to me. So what I'm going to do is I'll send this 12 down. It is in multiplication, goes down towards the other side. 204 upon this is equal to 12 is what I get. Now 12, again 2 times table. 2 6s are 12, 2 1s are 2, and 0s are 20. Okay, and 2 2s are 4. Then again I'm left with 102 upon 6 is equal to h. Then again I'm using the 2 times table. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 1s are. Then I will use the 3 times table. So 51 upon 3 is equal to h here. 3 1s are 3, 1s are 3, 4 and 5, 2 are left, that goes here, it becomes 21. In times table of 3, 7s are is 21. So height is equal to 17 centimeters is what you get in here. Okay, moving to the next question, it says that the base of a parallelogram is thrice the height. Okay, there's a parallelogram in here, and the base is equal to 3 times the height, and the height is known to me here. Height is h, base is 3 times the height. So let's write base is equal to 3 into the height, 3 times the height. Okay, and so let the height be h. Let the height is equal to h centimeters. That becomes the base is equal to 3h. It will become 3h centimeters.
Then it is given the area is 675. So the area is equal to 675. But I also know that the area formula is base into height. But what is my base? My base is 3h. What is my height? My height is h. So this is 675 here. When I multiply both of them, it becomes h into h. H square, 3 will remain. 675 is anyways there here. So this 3 is in multiplication with it. I'll send it down towards the other side. Okay, so it becomes 675 upon 3 is equal to h square. So 3 ones are 3 twos are 6. Then 7 will not come in 3 table, but 6 will come. 3 twos are 6. 1 is left. It is 15 now. 3 fives are 15. So we know h square is equal to 225. Then h is equal to root of 225. That is equal to 25 times of 25 is what I have here. No, we have 15 times of 15, 1 minute. I thought it is 625 and then I thought it is 625 and I said 25 times of 25, but no, it is 15. Root of 225 is 15. You got to remember a few roots. Let me just write those roots down for you. Okay. So if it is given as 140, 121, if it is h square or something, x square something, then h is going to be 11, because how do I get 121? 11 times 11 is 121. 12 times 12 is 144. 13 times 13 is 169. 14 times 14 is 196. 15 times 15 is 225. Like so, and like we have again a little longer table, which is 16. 16 times of 16 is 256, and we have 17 times of 17, that is equal to, in our, which will be equal to 289. These are the roots that you're supposed to learn and finished. Also 18, 19 they would not ask. 20 times 20 is 400, also you're supposed to learn it. So if it is given as 400 under root, then you will write the answer as only 20, not 20 times 20, because it is here, you see 15 times 15 is 225. So what is the answer of root 225? It is 15 is what you're going to do here. Okay, so they asked us to find the base, the height, sorry. The height is asked here. They asked us to find the base and the height. Height we know. Then what will be the base in here? The base is equal to thrice the height. So 3 times of 15 is what I do, which is equal to 45 centimeters is what I get for this one. Okay. Moving ahead with the fifth question, it says that one of the diagonals of a rhombus. Now diagonals means we are going to go with the rhombus, okay? This is the rhombus figure that we are going to do. These are the diagonals. One of the diagonals of the rhombus is 11.6 meters, okay? So one of the diagonal is 11.6 meters in here, okay? Area of the rhombus is given to me, which is 49.3. Find the length of the other diagonal is what they are asking me to find. Okay, so the area of triangle, the formula is area is equal to half d1 times d2, and here the d1 value is given to me as 11.6 meters. The d2 is not known to me, it is question mark, so I'm going to substitute here. The area is also given to me. Area is equal to 49.3 meters square is the area given to me. So the substituted here under the area, I'll write 49.3 is equal to half d1 I know, which is 11.6 into d2 I don't know. So first of all, we'll try to cut it here. 2 ones are think that the decimal is not there, just normally cut it down. 2 5s are 10, then this one will be left and it will go to here and it becomes 16. 2 8s are, but now put the decimal, it is going to be 5.8, because one decimal place from the left and here from the right, here also one decimal place from the right. So it becomes 49.3 is equal to 5.8 into d2 you will get. Okay, now this is in multiplication, it goes down in the division. So it becomes 49.3 divided by 5.8 is equal to d2. Here also after the decimal there's one decimal place, here also one decimal place, so the decimals will also get cancelled. After the decimal, equal number of decimal places should be there. So it becomes 493 upon 58. 2 table, this will not come. The 58 will come, but this will not come. So let's try with 3 table. I'm trying with the 3 table. 3, how many times will it go? 3, 28 will not come. 28. 3 ones are 3.
then 2 will be 28 will not come, not possible by 3 table also. 493 by 58 we will do for D2. Okay, just start normal division. Okay, 580 divided by 58 divided by 493 is what I have. Then how will it go? 58 ones are 58, 58 twos are 58. I have to go with a bigger number, so we will take 58 sevens are maybe 58 times of 7, 5 eights are 50, 7 eights are 56, sorry, 7 eights are 56, 735 40, 406 you will get. Let's take 58 sevens are 58 eights are 8 eights are 64, 46. You're getting this, near you're getting. So 8 times 464 you're gonna get. And so when you do the subtraction, this becomes 8 here. It goes 9 and then 2. 4 is 0. We'll put a decimal, we'll take a 0 here. Okay, we will take a like, so it will go as, we'll take a decimal and we'll put a 0 here. Okay, so how do I do it now? 58 times of something I have to check for 289. This is 400, so 58 times of 4 we will take and see. 4 8s are 32, 23 it is coming. And 58 times 5 we will see, 5 4s are 40, 25, 30 it will come. 300, it is going higher, isn't it? 40, 25, 290 it is becoming here. 290 you will get, no. So 0.5 we will take. So you're going to get 290. So it is 0. So the D2 value is going to be 8.5 will be the 290 value. D2 value, sorry, not 290, but D2 will be this. The next question we have is the area of the rhombus is given as 0.2 centimeter square and the perimeter is given as 48 centimeter square. The next thing is saying is find the distance of the sides of the rhombus from its opposite side. Okay, this is a rhombus and here I have the area given. So the area of rhombus is equal to, what is the formula that we use? Base into height. Kyunki if you look over here, if I'm taking the diagonals ka formula, I cannot find the area in here. And this is given to me as 102 square centimeters or centimeter square. Either way you write, it will be the same. Okay, the next thing that is given to me is perimeter is equal to, perimeter of the sides is equal to 4 into S, which is the sides of the rhombus. It is given as 48. Now, if you look at this, can I find what do you say that from here, can I find what am I saying? Can I find both the sides from the area formula? No. So from the perimeter, I can find the sides and then I can find the rest of the things. So here what it is going to be is, I'll use this perimeter formula to find the side of it and then we'll go ahead with it. So S is equal to, this is in multiplication, goes down towards the other side, goes in division. 48 upon 4 it becomes. Then 4 ones are, 4 ones are, and 2s are 12. So the side I get it as 12. Now I know that the area is equal to base into height is equal to 102. One of the sides is 12. So the base we are taking is 12. Height is not this height it is talking about, it is this height it is talking about. Okay, because I told this is also a parallelogram wherein all the sides are equal. So it is like this. You can say it is a parallelogram with all the sides are equal. Now the sides we got is 12, 12, 12, you got it. But then he's asking what is the distance. This distance he's asking me to find. So the height we have to find in here is equal to 102. Okay, now I'll send this down here. Height is equal to 102 upon 12 I'll go with the times table of 2 6 it will go, 2 5 and 1 it will go. So I have 51 upon 6 here. Again I'll go with 3 times table. Again 3 2 it will go, 3 2s yes, and 3 1s are 3 and 7s are 17. So you get 17 upon 2. Some students can directly say it is 8.5, but some students who cannot do it, you can just do the division here. 2 8s are 16 it will go, you will get 1, put a decimal, take a 0, 5 times of 10 which is equal to 0 again. So the height that you're getting is 8.5 centimeters is the height at which it is separated. Okay, that's how we get this one.
Done. Now moving ahead with the next question, it is given that the rectangular lawn is of the length of 20 meters and the breadth is 10 meters. So the complete lawn is of 20 and the length is 10 meters is given to me here. The triangular flower bed at each corner, there is a triangular flower bed at each corner is given. Find the lawn area excluding the flower bed, sorry. Fire bed I'm saying. So मुझे lawn का area find करना. I have to find this area excluding the flower beds that I have here. Okay, so I'm not going to consider this. So कैसे निकालेंगे इसको? I have to first find the complete area of the rectangle. So we'll find the area of lawn. Area of lawn will be actually length times the breadth. The length is given as 20 and the breadth is given as 100. So that becomes 200 square meters. Okay, now the flower beds are in the shape of a triangle. So flower bed area is equal to, and you see that all of them are same. Flower bed area is equal to half base into height. And how many do I have? I have 4 like this. So whatever answer I will get, that will multiply by 4. Okay, so first let's find the area of one flower bed. So that is half. Base is how much? This is the base and this will be the height. That is 2 into 2. And then again I have to multiply by 4 because there are 4 flower beds. This and this goes off. I'm left with 2 into 4. This is the only 2 left here, and then this is the 4. So 2 4s are 8 I get. 8 square meters is what I'm getting. So now area of the flower bed, area of the lawn excluding the flower. Area of lawn minus the flower bed is equal to, there are 4 flower beds, no? So minus the flower beds we are going to write is equal to, what is it going to be? 200 minus 8 is what you're going to get here. Okay, 200 minus 8, that is equal to 192 square meters will be the area that you're going to get here. Okay, so how did we do it? Triangle, half base into height, base into height, base into height, base into height. So 2 into gets cancelled. 2 is what I'm left with. 2 into 4 are there like that. 1 2 3 4. So 2 into 4 is 8. So when I subtract from the complete area, I get this as the area of the flower bed. The next question is given as the diagonal of a quadrilateral is 30 centimeters in length. Okay, there's a quadrilateral. I don't know what is the shape of the quadrilateral, but in there it says the diagonal is 30 centimeters in length and the length of the perpendiculars to it from the opposite vertices are, from this vertex the length that is drawn, and from this vertex the length of the perpendicular that is drawn here. Okay, they are given as, this is given as 8 centimeters and this is given as 10 centimeters. And then it says find the quadrilateral. इसने मुझे नहीं बोला कि पैरेललोग्राम है क्या है, पता नहीं मुझे, तो बस मुझे बोला है क्वाड्रिलैटरल है, तो मैंने शेप भी क्वाड्रिलैटरल कर दिया, कोई भी 4 साइडेड फिगर वाला शेप दे दिया मैंने, रेक्टेंगल, स्क्वायर या पैरेललोग्राम नहीं दिया मैंने देखो ये वाली छोटी है, ये ऊपर जा रही है, ये वाली बड़ी है और ये एक है. Okay, so this is the shape I've given. Now he's asking me find the area of the quadrilateral. Now to look at the quadrilateral, I can see this is the shape 1 and shape 2, and both of them are looking to me like they are the triangles. So area of triangle 1, area of one triangle is equal to this one. That is half base into height. I am going to do. What is the half? Half is half. Base is 30 centimeters into 30, and the height is given as 8 centimeters in here. Then this goes as 2 1s are 2 15s are, so it is 15 times of 8 I get, and that is equal to 15 times of 8 is 8 5s are 40, 4 0, 8 1s are 8, 9 10 120 square centimeters you will get. Likewise we'll find the area of the other one. Area of the second triangle is equal to half base into height is what I have here. Half is here, base is again the same thing, 30 is the base, and the height now is 10. So this goes as 2 1s are and 15 times, so it is 15 into 10, that turns out to be 150 square centimeters. Then the area of quadrilateral is equal to area of quadrilateral is lateral is equal to, we will write it as 1 plus 2, that is 120 plus 150, which is equal to 07270 square centimeters is what you will get the area here. Okay, in the ninth question it is given that in the figure ABCD is a rectangle and PQRS is a square.
and find the area of the shaded region. So what we are going to do is, this is the shaded region given to me with 6 centimeters, 8 centimeters, 6 centimeters, 4 centimeters. This is given as 6 again, and this complete side is 10 centimeters. We are just going to approve a look at the ABCD first. And so if I want to find the area of the shaded region, that means I have to find the area of the rectangle. From this, I'm going to subtract 1, 2, and 3 triangles from it, isn't it? So first we will write rectangle area is equal to, that is length times the breadth. So what is the complete breadth that I have? 8 plus 6 is the breadth. 6, 6, 12, 13, 14, it will be the 14 is the breadth. And what is the height given over here? It is 10. So it is 10 into 14, which is 140 square centimeters is given here. Okay, then I have to find the areas of the one triangle. Area of one triangle is equal to half base times height is what I have here. What is the base? 8, and the height is this. Half base is 8 and the height is 6. 2 ones are 4s are 4 6 are 24 square centimeters is what you have. Okay, next we have this shape here, the second one here. Okay, now if you look at the second one, how much is my triangle here? Okay, I have to find this particular 6 centimeters ka side. Okay, so if this is there, this is also 6 centimeters, this is also 6 centimeters. Before I go with the second one, I'll find the area of the third one. That's easy. Area of the third shape is equal to half base into height, and that is half. The base is going to be, if you look at the base here, if this is 6 centimeters as such, this is going to be 8 centimeters into 8 into height. Height is already given as 4 centimeters. So 4 we will write here, and we'll simplify. 2 ones are 4s are. So it becomes 4 4s are 16 square centimeters is what you get. Then we have to calculate the area of this shape. The area of this shape is taken as, if you look at the figure that is given, they are not passing through the same point. Okay, so what is the height of it is going to be? Okay, what will be the height of that, which is going to be taken over here? The base is 6 centimeters and the height is going to be 5 centimeters. Okay, the height will be 5 centimeters. Here area of the second one is half base into height is given. So that is half, and the base is 6 centimeters, and the height that I have here is, it is not passing through this, it is a little bit higher. So if this is 4, this is 5 here. Into 5 is what I'm going to do. 2 ones are and 3s are. 3 5s are 15 square centimeters is what I get. Area of the shaded region is equal to, area of shaded region is equal to a rectangle minus the first triangle minus the second triangle minus the third triangle is what I get here. Okay, and then it is going to be, complete triangle is 140 minus 24 minus 16 minus 15. So when I do it, first 140 will remain as it is, and then 4 10 15 will come here. 3 4 5 45 is we are going to subtract in here, which is equal to 95 square centimeters will be the area of the shaded region here. Now in this particular figure, we have to find the area of the shaded region again. This is a square, and so these are the two triangles that we have. So area of square is what you're going to find out. Area of square is equal to side into side, which is this is 28. So that is equal to 28 into 28 is what we are going to do. So when you do the multiplication, 28 times of 28, 8 8s are 64, 2 8s are 16. 16 plus 6 is 22. Plus 2 8s are 16, and 2 2s are 4, 5, 56. 4, 8, and 784 is what you get here. Okay, so it is equal to 784 square centimeters. Okay, then after, what we are going to do is we are going to find the area of the first triangle. So area of 1 is equal to, that is triangle, so half base into height, and half base is given as this, which is 28, or and the height will be 14. Then 2 ones are 14s are 14 into 14. We have just learned that it is 196 is what that value is.
okay, square centimeters. This area of the second one, area of 2 is equal to, this is also a triangle, half BH, half base is going to be 14 and the height is also going to be 14 into 14 into 14. That goes 2 ones are 7s are. So you get 7 into 14. So it's 14 times of 7 is 428. 4 7 4 ones are 7, 98. Okay, it is equal to 98 square centimeters. Area of shaded region, area of shaded region is equal to, you then get 784 minus the second one, first in the 196 minus 98. Since they both are negative, we will add the negative terms first. 6 6 12 13 14 1 4 9 9 18 19 1 9 294 784 minus 294 you will get. Okay, 784 minus 294, 0, subtract it, make it a 6, and then 9, and then you get 4. So it is 490 square centimeters is the area of the shaded region. That is the end of the second exercise.